मम्मी को क्या करता है? राधे राधे पंकज भैया, स्वागत है आपका। और और बताओ क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है पंकज भैया हमारे लाइफ में। नहीं दीदी मैं नहीं आ पाई थी, मैं दोपहर में बता रही थी ना कि मेरे पास मोबाइल नहीं है ठंडा पानी थोड़ी। और नहीं आ पाऊंगी तो आप पूरा मत मानना। 4 बजे हम आपको दोनों आईडी से सपोर्ट कर दूंगी। 3 बजे से लगा दूंगी एक वाली आईडी, नहीं या तो 3:30 बजे से लगा के 4:30 बजे एक निकाल लूँगी और मैं अपनी वाली तो चलने दूंगी भी। 6 बजे तक चलेगी तो आपका हो जाएगा। मम्मी पापा को गर्म पानी और दवाई देना। हाँ आप भले कहीं गई थी दीदी, लेकिन मैं नहीं गई थी तो झूठ क्यों बोलूं? हाँ भैया मेरा खाना पीना हो गया है। राधे राधे दीदी, राधे राधे। बताओ आज हमारे लाइव में आए थे? नहीं नहीं दीदी आज मैं नहीं आई थी आपकी लाइव में। रीति दीदी आज मैं नहीं गई थी। मैं सुबह कर दूंगी आपका, 3 घंटा कर दूंगी, हो जाएगा। संजू भाभी राधे राधे। और बताओ क्या हाल चाल है? आप बताओ भाभी जी, खाना पीना हो गया और घर परिवार में सभी लोग ठीक हैं? सभी लोग ठीक हैं पंकज भैया। आज आप बहुत जल्दी आ गए, क्या बात है? लाइव में स्टार्ट होते हुए मेरी लाइव आप आ गए हो। जैसे लग रहा है कि मेरा इंतज़ार ही कर रहे थे आप। दिव्यांग जा लाइक देता, कौन दवाई मांगता है? कौन दवाई चाहिए? गरम पानी। हाँ गरम पानी। कौन गर्म पानी? हल्दी पानी? गरम पानी। हल्दी पानी? गरम पानी। गर्म पानी कौन दवाई है? दिन भर ठंडा पानी पीबा समझे, गर्म पानी पी तो नीक हो जाए। मतलब गर्म पानी और दवाई तो दवाई के तो पूछते नहीं है, कुछ बताते नहीं है। गर्म पानी अकेले कहा था हम सिटीजन का वाटर। हम नहीं जाने देता, आप पढ़े लिखे नहीं है। राधे राधे दीदी, राधे राधे। थैंक यू मंजू दीदी, थैंक यू। संजू दीदी का क्लिकर चल रहा है भैया, इसीलिए जवाब नहीं मिल रहा है। और बताओ पंकज भैया, आपका खाना पानी हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ भाभी जी? थोड़ा कुछ नहीं हुआ है भैया। आज आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए आपकी लाइव में पहले ही आ गया। काफ़ी दिनों के बाद मिला हूँ। हाँ ये तो सही बात है, और मैं आज सुबह से ही परेशान हूँ सबके लिए, लेकिन क्या करूँ। रीना दीदी की लाइव ही नहीं मिलती है। अभी 9:30 बजे चालू होगी उनकी लाइव, लेकिन दिव्यांश वाले मोबाइल आईडी का ब्लू ही हटा लिए हैं, तो हम क्या करें, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और दिन में 11 बजे की 11:30 बजे वाली लाइव है उनकी, नहीं मुझे मिल रही है। आज मैं जल्दी गई थी फिर भी उनकी लाइव मुझे नहीं मिली, और मेरे भी लाइव में नहीं आ रहे हैं कि क्या परेशानी है क्या नहीं है, कुछ पता लग जाए। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। नमस्ते मौसी जी। मोहिनी जूली लोकगीत, जूली की आईडी है ये। नमस्ते बेटा, और बताओ क्या हाल चाल है? जूली हो ना आप? मोहिनी जूली लिखा है। नमस्ते मौसी जी, नमस्ते बेटा। चूँकि जूली ही नमस्ते मौसी बोलती है। और बताओ जूली क्या हाल चाल है? थैंक यू मौसी जी। पर ब्लू दे दो हमारे लिए, ये आईडी आई। अच्छा आप इस आईडी से आ गए, ठीक है ओके। नई आईडी बना ली क्या जूली? थैंक यू बेटा।
और बताओ क्या हाल चाल है। मैंने दे दिया, ब्लू दे दिया। अब वही वाली आईडी आप आया करेगी। अच्छा अच्छा, गुड मॉर्निंग तनु, स्वागत है। और बताओ सब ठीक है मौसी। अच्छा सब ठीक है, मैं आशीष हूँ। ओके थैंक यू बेटा आशीष। और बताओ क्या हाल चाल है, तबीयत पानी कैसी है। उनका नेट इंटरनेट में सही नहीं चलता है। सुबह लाइव आए थे पर थोड़ी देर के बाद बंद कर। कितने बजे आई थी भैया। अब तो मुझे पता ही नहीं चल पा रहा, नहीं तो मेरे पास तो नोटिफिकेशन आता था उनका, नोटिफिकेशन आता था। और इस समय नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा, जबकि मैंने बेल आइकन ऑन किया है। और उनके चैनल पे जाके देखती हूँ कि लाइव चली है कि नहीं चली है, तो मुझे कुछ दिखा भी नहीं रहा था। मैं देख रही थी 5 घंटे 6 घंटे का दिख रहा था। जब मैं लाइव उनकी नहीं मिली, सब करके थक गई, तो फिर 12 बजे उनकी लाइव ढूंढ रही थी, 12:30 बजे चैनल पे जाके, तो फिर सब 5 घंटा पहले की लाइव दिखा रही थी। मौसी के इसी पर चलेगी सुबह लाइव। अच्छा इस पे लाइव चलाओगी, ठीक है। फिर मुझे भी ब्लू, वैसे तो उस वाली आईडी से ब्लू था। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जूली मौसी के इसी पर चलेगी सुबह लाइव, किसकी लाइव चलेगी। और बोलो भाभी जी। हाँ भैया खाना पीना हो गया मेरा। मैं आपकी लाइव में आने के लिए बोली थी, आप क्यों इतना जल्दी लाइव बंद कर दिए थे। अपना सुनाओ, घर परिवार सही है। मैंने थोड़ा, मुझे लेट हो गया था, और कितना 3:40 पर आपकी लाइव चेक की तो बंद हो गया था, लेट कर दिया भाभी जी। अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और बताओ आशीष, खाना पीना हो गया, तबीयत पानी कैसी है बेटा। जूली बेटा मैं समझ नहीं पाऊँ, इस पर लाइव चलेगी, तुम्हारे यहाँ लाइव चलेगी, किसके बारे में बता रही हूँ मैं समझ नहीं पाई। एक बार मुझे फिर से बताओ, मम्मी लाइव चलाएंगे क्या इस आईडी पर। भाभी अपने आप मेरा लाइव वीडियो बंद हो गया था, मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, क्या हीटर चालू हो जाता है। अच्छा अपने आप बंद हो गया था, मैंने सोचा चले इस पर से ब्लू हटा लो बहन। अच्छा अच्छा ठीक है दीदी, मैं हटा दे रही हूँ, मैंने हटा दिया दीदी। क्या नहीं का बास मारत है। पूनम बहन इस पर से ब्लू हटा लो, उसको लिखना बोलना नहीं आता, चुप हो जाती है, सही से लिखती नहीं। अच्छा मैं हटा दी दीदी, मैं हटा दी हूँ। वही लाइव की बात बोल रही थी तो मैं नहीं समझ पा रही थी। दिलशेर भैया हंस रहे हैं, बहुत अच्छा। तब और सुनाओ भाभी जी, बच्चे लोग ठीक हैं, और भाई साहब का क्या हाल चाल है। सब लोग ठीक हैं भैया, बच्चे लोग भी, भाई साहब सब ठीक हैं। थैंक यू दिलशेर भैया। और आज मैंने करीब आधे घंटे तक थी, आपको देख रही थी संजू दीदी मोहिनी वाली के आईडी पर। मैं काफ़ी देर तक देखी, मैंने कमेंट भी किया, मेरा कमेंट शो नहीं कर रहा था। हम आज सीमा दीदी के लाइव में नहीं गए थे, कमेंट नहीं शो किया, बस ऐसे देख रही थी। आप बैठी रही थी, बोल रही थी, चिढ़ा रही थी सब जो अचार पूड़ी का कमेंट आया था उनको। और फिर उसके बाद ढोल आया, ढोलक बजा रही थी, सीख रही थी, उसमें पाउडर वाउडर। मैं काफ़ी देर तक देखी, फिर मैंने कहा जाने दो, अब क्या करूं, जब कमेंट ही नहीं शो कर रहा है तो फोकट में नेट खर्च क्या करूं। फिर आधे घंटे तक मैं थी, उसके बाद मैं हट गई लाइव से। मैं बस ऐसे देख रही थी आपको, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूं। ये वही चैनल है सीमा निषाद ऑफिशियल वाला, जो पहले चलती है वही चैनल है, लेकिन इस पर मैंने नाम चेंज करवा दिया है। अच्छा नाम चेंज करवा दिया है, तो मैं तो ध्यान भी नहीं दिया है। लेकिन आज तो उसी पर चल रही थी ना, सीमा संजू ब्लॉग, यही तो चैनल था वो।
कि जो आपका था एक सीमा निषाद ऑफिशियल, अच्छा वो वाला है। ये आपका था सीमा निषाद ऑफिशियल, हाँ वो वाला है। तो ये मोहिनी जूली के नाम से हो गया। अच्छा, तो इसको हमको ज्वाइन करना पड़ेगा ना, उसको मैं ज्वाइन की थी तो इससे ज्वाइन करना पड़ेगा। थैंक यू गुलशेर भैया, थैंक यू। तो लाइव चलाओगे इस पे दीदी? चलेगी इस पे क्या लाइव, बता देना। हाँ मैं बैठी थी सीमा दीदी की लाइव में, क्योंकि मेरे फ़ोन से कनेक्ट करके उनकी लाइव चल रही थी हॉटस्पॉट करके, इसलिए मुझे बैठना पड़ा था। अच्छा, किरण वर्मा, राधे राधे किरण दीदी, स्वागत है आपका। और बताओ कैसी हो किरण दीदी? आपको मैं कमेंट छोड़ने को कही थी लेकिन आपने कमेंट छोड़ा नहीं था। मैं बहुत चेक की थी, आपका कमेंट मुझे मिला नहीं, पता नहीं शो नहीं कर रहा है आपका कमेंट की। 2-3 लोगों का आया था, मैं 2-1 लोग को रिटर्न भी की थी, ज्वाइन भी किए थे मुझे, पर आपका कमेंट मुझे नहीं मिला। मैं यही सोच रही थी कितना रिक्वेस्ट करके आप गई हो, यही सोचती होगी कि मेरे लाइव में नहीं आई। आज हमारे यूट्यूब फैमिली खाना खा लो। थैंक यू भैया, पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उठा चला, हम पानी देते खा रहा है। सुबह खाया रहा अरे खाए रहे। तो अब नुकसान ना करे, हाँ, फोन कर दो। उल्टा जिन बोला। चलो हाँ, सीमा निषाद ऑफिशियल था पहले ना, और वो सीमा संजू ब्लॉग है। हाँ वो तो सीमा संजू ब्लॉग था। ठीक है मरुति दीदी, आप ऑन रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो संजू भाभी, इस आईडी का नाम रखो जूली संजू या फिर संजू जूली। हाँ ये नाम जो आप बता रहे हो पंकज भाई, ये तो अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि वो किसी दूसरे हिसाब से रखी हो। बाकी मैं भी यही सोच रही थी, पर अब वो तो किस लिए रखी हैं दीदी को पता होगा। हाँ कल से चलाऊंगी, कल परसों से चलाऊंगी, मतलब सभी को बता दूंगी, सबको ज्वाइन करवा लूँगी तब। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कमेंट छोड़ देना दीदी इस वाली आईडी से, और ताकि फिर मैं जुड़ जाऊंगी, नोटिफिकेशन ऑन कर लूँगी। उसके बाद में फिर जब भी चलाओगी तो मेरे पास आ जाएगा नोटिफिकेशन। कोई बात नहीं दीदी, फिर से कर देंगे। हमें लगता है कमेंट शो नहीं कर रहा है आपका किरण दीदी, क्योंकि जब आप दोपहर में की थी तो मुझे मिलना चाहिए था ना। तो हमें लग रहा है एक बार जैसे रीना दीदी का हुआ था, उन्होंने कितना कमेंट किए थे उनके पास, पर एक भी कमेंट उनको नहीं मिल रहा था। पता नहीं कैसे उस पर शो होता है, तो मुझे नहीं पता। तो हमें लगता है वैसे ही आपका शो नहीं कर रहा है। बाकी आपके कमेंट करने में कोई कमी नहीं है, आप कमेंट कर रहे हो। ला और गर्म चाहिएगा, फिर कोशिश करना सुबह 6 बजे। बहन 6 बजे तो मेरा रहता है दीदी, 6 बजे मैं नहीं आ पाऊँगी, वही 10-12 बजे वाले में मैं सोच रही थी आने के लिए, हो जाता है बाजी टाइम बाजार ऐसा हो जाता है।
हाँ वो तो होता है, 6 बजे मेरा चलता है ना, 6 से 7 1 घंटा मेरा चलता है। कुसुम पाल लोकगीत, थैंक यू कुसुम दीदी, स्वागत है, वेलकम है आपका। और बताओ क्या हाल चाल है? राधे राधे। थैंक यू रीति दीदी, थैंक यू। पंकज भैया आप बताओ, खाना पीना खाए आप कि नहीं खाए हो? और घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? दीदी 3 वीडियो पर कमेंट किए हैं अभी। अच्छा गाना का नाम बताओ तो मैं दूसरी मोबाइल से चेक करती हूँ, क्योंकि मेरा चैनल उसमें भी लॉगिन है। देखती हूँ फिर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। आप किस पे कमेंट किए हो बताओ तो मैं तुरंत चेक। दिल में मांग, अच्छा दिन में मंगा पिया लहंगा चुनरी। दिल में मंगा दे पिया लहंगा चुनरी, इस वीडियो पर कमेंट किए हैं। नहीं वो तो ठीक है दीदी, आप ज़रूर आओगे, लेकिन हाँ सपोर्ट की ज़रूरत तो सबको है ना। अगर हमें किसी के लाइफ में डेली डेली जाएंगे और वो मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मुझे ही दुख होगा ना, कि हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं और वो मेरा सपोर्ट करने के लिए नहीं आते हैं। तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है कि आप मेरे लाइफ में आओ और हम आपकी लाइफ में ना आ पाएँ। जाले हम बने एक दूसरे की नहीं मदद करेंगे तब कैसे? हाँ वही चीज़ है ना, इसीलिए तो मैं सोच रही हूँ। रुको हम अभी दूसरे और मारे। हमारा मोबाइल ना छुआ कर। दिन में मंगा दी पिया लहंगा चुनरी जाने का। हाँ मैं चेक कर रही हूँ, अभी रुको 1 मिनट। हम आपकी आईडी से ही अपनी दूसरी आईडी से ज्वाइन कर रहे हूँ। थैंक यू कुसुम दीदी, खाना पीना हो गया आपका कि नहीं? हाँ हाँ भाभी जी, आपका आशीर्वाद से हमारे घर परिवार में सब लोग ठीक हैं, ठीक रहना चाहिए भी। भक्ति दीदी राधे राधे, कैसे हो? रेवती दीदी का क्लिकर तो नहीं चल रहा है, चेक कर लो बहन कमेंट किया है कि नहीं। हाँ चेक कर रही हूँ दीदी, अभी किसी के लाइव में है, 2 मिनट के लिए मैं निकल के चेक कर रही हूँ। अरे दीदी दूसरे के खाना खा लिए पंकज भैया? संजू दीदी और बताओ क्या हाल चाल है सब? सब लोग कैसे हैं घर में? हाँ अभी वाला आपका आया है, शॉर्ट वीडियो पर आ गया है आपका। मैं भी दूसरी आईडी से ज्वाइन कर ले रही हूँ।
ठीक है, ऑन रहो। राधे राधे पंकज भैया, राधे राधे। पंकज भाई ज्वाइन कर लो, रिटर्न दे देंगे। अभी मिल गया है आपका कमेंट मुझे, लेकिन लॉन्ग वीडियो आपका 2 ही दिख रहा है और शॉर्ट वीडियो पर इस मोबाइल से मेरा कमेंट नहीं जाता है। ठीक है, हमने नोटिफिकेशन ऑन कर लिया है। पंकज भाई ज्वाइन कर लो, रिटर्न दे रही हूँ। पंकज भैया, किरण बहन बोल रही हैं ज्वाइन कर लो, रिटर्न दे रहे हैं। किसको ज्वाइन करना है भाभी जी, एक बार नाम बताओ। किरण वर्मा को। दीदी लॉन्ग वीडियो हमारे पड़ी नहीं है, 2 पड़े हैं। हाँ, वही तो बोल रही हूँ ना कि आपके पास लॉन्ग वीडियो 2 पड़े हैं बस। चेक किए, लेकर ही हट गया। थैंक यू बेबी, थैंक यू। राधे 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 राधे। अर्चना दीदी स्वागत है आपका, वेलकम है। मिल गया है, कमेंट मिल गया है और हम दूसरी आईडी से आपको ज्वाइन कर दिए हैं, कमेंट नहीं किए हैं। आप देखना सब्सक्राइबर बढ़े होंगे आपके। कमेंट उससे शॉर्ट वीडियो पर नहीं जाता है। बाय बाय, बाय बाय बहन, बाय बाय। एक बात बता दो मुझे, 6 बजे से कितने बजे तक आप चलाती हैं? अगर 8 बजे तक रहेगा तो मैं सुबह में ही आ जाऊंगी कुछ टाइम के लिए। कितने बजे तक रहता है? 6 बजे से हम 7 बजे अपना बंद कर देते हैं। दीदी हम दिन के 12 बजे चलाते हैं। हाँ, अभी जो 6 बजे वाला बता रही थी। पूनम दीदी प्रणाम, कैसी हो आप? खुश रहो, खुश मस्त रहो। आप बताओ कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। और बताइए, भोजन हो गया आपका? हाँ, मेरा भोजन हो गया है। आप बताओ अपना, कैसी हो? 6 से 8, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं आ जाऊंगी आपकी लाइव में 7:30 बजे, ठीक है? 7:30 से 8 तक आपका सपोर्ट कर दूंगी। चूँकि 7 बजे मैं बंद कर देती हूँ तो ये टाइम बहुत अच्छा है मेरे लिए। और 12 बजे तो हम दूसरे की लाइव में रहते थे, तो सोच रहे थे जाने के आऊँगी सुबह। दीदी आप सामने नहीं आती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे आने का मन नहीं करता। क्या करें खुशबू, गर्मी बहुत तेज़ है। और अभी जो है मैं इधर भी रहती हूँ और दोपहर में इतना ज़्यादा गर्मी रहती है, फ़ोटो लगा के मैं कैसे भी बैठी रहती हूँ, लेट भी जाती हूँ। एक एक दो दो दिन कंघी करने को हो, जो मन नहीं करता है तो फिर कैसे सामने आऊँ, अच्छा नहीं लगता है। जीजा जी ठीक है? हाँ जीजा जी ठीक है। 6 से 8, हाँ ठीक है, 6 से 8 है तो मैं आऊँगी, सुबह में आऊँगी आपकी लाइव में। पर मुझे ब्लू दे देना। कमेंट कैसे करूँ? अभी मैं कमेंट कर दूँगी, ठीक है? आपके चैनल पे मुझे ब्लू दे देना, तभी शो करेगा, नहीं तो नहीं शो करेगा। थैंक यू मेरी प्यारी बहन। ठीक है, कमेंट से ब्लू दे देती हैं ना आप? ब्लू दे देना मुझे, अभी मैं कमेंट कर दूँगी। मेरी लाइव में सभी को स्वागत, मोस्ट वेलकम है। और बताइए सब लोग कैसे हो? मोस्ट वेलकम कर रही हैं। बाय बाय।
खुशबू बहन, सब लोग बताओ कैसे हैं, सबका हाल चाल पूछ रही हैं। पंकज भैया और बताओ हाल चाल, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, बताओ। अब अभी तक मैं काम करने गई थी इसीलिए नहीं बात कर पा रहे थे, मैं बात करूँगी। राधे राधे, थैंक यू रितु दीदी, थैंक यू। थैंक यू आशीष, थैंक यू रितु दीदी, थैंक यू संजू दीदी। ठीक फोन, चलो ठीक रहना चाहिए, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, नहीं तो ज़रूरी नहीं है लाइव में खुशबू, मैं फ़ोन से ही बात कर लिया करूँगी। आज तो मेरे पास टाइम था पर मोबाइल नहीं थी मेरे पास, और आज ये समझो कि मैंने पूरा दिन सोई हूँ, सपोर्ट भी नहीं किसी का ज़्यादा किए हूँ, बस सो रही थी 4:30 बजे सो के उठी थी, न कोई घर का काम की न तो किसी का सपोर्ट की हूँ, बस सो रही थी। थैंक यू। नैना नबिश कैसे हैं? ठीक हैं बहन, नैना नबिश भी ठीक हैं, सब लोग सो रहे हैं, अभी मैं लाइट चला रही हूँ, जग रही हूँ, बाकी सभी लोग सो गए हैं। किरण वर्मा जी को हमने ज्वाइन, किरण जी तो बाय बाय करके चली गई, वो बाय बाय करके चली गई भैया। अब कल देखो मैं जाऊंगी, अगर कमेंट मेरा शो करेगा उनकी लाइव में तो, क्योंकि ये 2 दिन से मेरी लाइव में आ रही हैं बेचारा, बहुत रिक्वेस्ट की है पर मैं जा, टाइम ही गलत रहता है तो हम क्या करें, मेरी क्या गलती है। ज़्यादा करके सबकी लाइफ सुबह में है, सुबह में मेरे पास मोबाइल नहीं रहती है, मैं करूं तो क्या करूं। पंकज भैया समोसा खा चुके, खुशबू बहन बोल रही हैं पर समोसा खा चुके पंकज भैया। कभी कभी तो मेरा मन नहीं करता है कि अपना ही लाइव बंद कर दूं, क्या करूं। अभी रीना दीदी की लाइव चालू हो गई, दूसरी आईडी पर ब्लू होता तो अभी मैं जुड़ जाती इनकी लाइव में, क्या करें। साथ में ठंडा पी लीजिए, अच्छा देख लो पढ़ लो। पंकज भैया खुशबू क्या बोल रही हैं, समोसा चुप गया, साथ में ठंडा भी पी लीजिए। थैंक यू कुसुम दीदी। अच्छा ये क्या बात हुई आई, खुशबू क्या पढ़ी, मैं मुझे तो नहीं दिखा। अच्छा ये क्या बात हुई, हंस ले रही हो, क्या लिखे थे पंकज भैया, मैं तो नहीं देखी। अच्छा खुशबू बहन नमस्ते जी, हाँ हम समोसा खा चुके हैं, अब तो ख़त्म हो गया, अच्छा इसीलिए आप लिखी, हाँ ये क्या बात। हम लोगों को पूछ लिया करो कह रहे हैं हम लोगों को पूछ लिया करो। पंकज भाई आप पढ़ ले रहे हो ना,
क्लिकर तो नहीं चल रहा, सिर्फ एक ही 2 क्लिकर चल रहा है। सिर्फ अर्चना दीदी का चल रहा है बस, और एक संजू दीदी का चल रहा है, बाकी क्लिकर नहीं है। न पढ़ पाना तो बताना, मैं पढ़ के बता दूँगी। देख लिए खुशबू, जब आप हंस के कमेंट की थी ना, तभी मैंने देख लिया कमेंट कि क्या लिखे थे पंकज भैया। पता नहीं कैसे छूट जाता है, इतना ध्यान से देख रही हूँ, थोड़ा भी इधर उधर मुंडी करो तब तक चला जाता है। पंकज भैया भोजन हो गया? राधे राधे राधे। नहीं खुशबू है ना, अभी खाना नहीं हुआ है, अभी खाना खाएंगे हम लगभग 11 बजे। अब बहुत लेट क्यों खाते हो पंकज भैया? 11 बजे आप खाना खाओगे, बहुत लेट खाते हो। अभी तक तो आप खाना पीना खा के तब सबकी लाइव में जाते थे। नहीं, हम कोई कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, केवल ऑन है बस। नहीं, आप पढ़ रहे हो तभी तो जवाब दे रहे हो ना। खुशबू का कमेंट आप पढ़ रहे हो तभी तो जवाब दे रहे हो। नहीं पंकज भैया, आप कमेंट पढ़ लो मेरा, पढ़ लो पंकज भैया कमेंट। खुशबू बोल रही है मेरा कमेंट पढ़ लो पंकज भैया। ऐसे चालू कर दो मत छोड़ो, ऐसे चालू कर दो मत छोड़ो। अच्छा, ऐसे चालू करके मत छोड़ो। अच्छा, क्या हुआ? बहुत हंस रही है खुशबू। परी की क्या हाल चाल है? सो रही है कि जग रही है पूरी? राधे 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 राधे। लेडी जी, दीदी जी फोटो में आप लिपस्टिक लगा कर खड़ी हो, बहुत अच्छा लग रहा है। खड़ी नहीं हूँ कुछ, बैठ के खींची थी, बैठी हूँ, खड़ी नहीं हूँ। और वैसे भी वीडियो बनाती हूँ, फिर भी लगाती हूँ, लेकिन कैमरा अच्छा नहीं है ना, तो उसमें मालूम नहीं पड़ता, बहुत मध्यम आता है। और ये जो जहाँ से फ़ोटो वाला कैमरा अच्छा है, पर वीडियो बनाने वाला नहीं अच्छा है। वीडियो चालू करते हैं तो नहीं अच्छा आता है। आकाश गेमिंग, स्वागत है आकाश भैया, वेलकम है। और बताओ क्या हाल चाल है आपका? कुछ दिन तक मेरा ऐसा ही रहेगा, उसके बाद फिर टाइम से हमारा खाना होगा। लेकिन क्यों ऐसा? कैसी हो जी? मैं ठीक हूँ आकाश भैया, आप बताओ आप कैसे हो? आजकल जीजा जी रहने देते? हाँ, आजकल जीजा जी रहने देते मतलब खाना हो गया आपका? हाँ भैया, मेरा खाना हो गया, आप बताओ आपका हुआ कि नहीं हुआ? थैंक यू।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी 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 थैंक यू। अच्छा हो जी, बिल्कुल अच्छा रहना चाहिए भैया। भोजन हो गया? खुशबू क्या बोले? आजकल जीजा रहने देते? दीदी आपको मिला कि नहीं? क्या चीज़? नहीं नहीं खुशबू, वो कमेंट का क्या लिखी थी उसको मैं नहीं समझ पाई हूँ। ओम नमः शिवाय, राधे राधे। खाना हो रहा है हमारा। अच्छा अच्छा भैया, खाना हो रहा है। ठीक है, आप खा लो भैया, खा लो। क्या हुआ पंकज भैया? आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू भैया सपोर्ट करने के लिए। लेकिन खाना खा लो उसके बाद सपोर्ट करो। दोनों काम साथ में कैसे करोगे? और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा सपोर्ट करने आए हैं। ये कर दो पूनम। हाँ अच्छा, पिन कर दो, पिन कर दो पूनम बहन, जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करो। ठीक है ठीक है। ये मोहिनी जूली वाली आईडी को से ज्वाइन हो जाइए सब लोग, रिटर्न मिल जाएगा। और जिसको ज्वाइन करना हो बता दो, मैं ब्लू कर दूँगी, ज्वाइन कर लो। और बताओ भाभी जी, दिव्या और दीक्षा, दीक्षा और दिव्यांश कैसे सो गए क्या? हाँ भैया सब लोग सो गए हैं। दीक्षा दिव्यांश उनके पापा सब लोग सो गए हैं। मैं भी जब मोबाइल, कल भी अभी मोबाइल चला रही थी, चला लेट के तो सो गई, इसीलिए आज बैठी हूँ मैं। लेटूंगी तो सो जाऊंगी। खुशबू बहन और बताओ, आपका खाना हो गया? और परी ठीक है? एक हाथ से खाना खा रहा हूँ, एक हाथ से कमेंट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ पंकज भैया, हाँ उनका खाना हो गया है। हो गया है, परी ठीक है। थैंक यू। थैंक यू खुशबू, राधे राधे अर्चना दीदी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू आशीष, थैंक यू आकाश भैया, थैंक यू अर्चना दीदी, थैंक यू पंकज भैया, थैंक यू। मंजू दीदी आप हैं कि चली गई हैं? अगर ऑन हो तो एक बार बता दो कि हम ऑन हैं। खुशबू बहन थैंक यू, संजू दीदी थैंक यू। और तो कोई है ही नहीं मेरी लाइफ में।
राधे 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 दीदी राधे राधे। आकाश भैया आपका चैनल है क्या? थैंक यू रुति दीदी, बस करो, बस एक बार बता दिया करो ऑन है। काफ़ी टाइम हो गया तो हम सोचे चली तो नहीं गई हैं। आप काम कर लो, टाइम नहीं है तो मत कमेंट करो, ऑन लिख कर भेज दिया करो बस खाली। राधे राधे पंकज भैया, राधे राधे। हमारा चैनल है, अच्छा आपका चैनल है तो आपको किसी से जुड़ना हो तो बता देना, मैं ब्लू दे दूँगी भैया आपको। अगर ज्वाइन करना हो तो बता देना, ब्लू दे दूँगी। हम ज्वाइन करवा सकते हैं, कमेंट के साथ रिटर्न कर दूँगा। अच्छा आप ज्वाइन कर, अभी पंकज भैया एक लोग को ज्वाइन करके आए और उनको रिटर्न ही नहीं मिला, तो अब मैं कैसे बोलूं ज्वाइन करने के लिए। रुति दीदी की आईडी जो चल रही है, इनको इंग्लिश भी पढ़ना नहीं आता है। खाना पीना हो गया पूनम बहन की? अभी नहीं, मेरा तो खाना हो गया अभी भी खा। हाँ दीदी मेरा खाना पीना हो गया है। अच्छा आप अभी खा के उठ गए। अर्चना का सपोर्टिंग आईडी है, पंकज भैया है, जूली मोहिनी वाला है और रुति दीदी, बस 3 आईडी है। रुति दीदी अगर ज्वाइन कर पाओ तो ज्वाइन कर लो आकाश भैया को, नहीं तो मैं ब्लू दे देती हूँ। आकाश भैया आप ज्वाइन कर लो, हम रिटर्न कर देंगे। आप ब्लू दे, ठीक है मैं ब्लू दे दूँगी, दे दिया है भैया, आप ज्वाइन कर लो। बस मैंने जितना बताया वही 3 ज्वाइन करना, बाकी सब सपोर्टिंग आईडी है। एक पंकज भैया, एक भक्ति भजन ड्यूटी और एक जो एक पिन आईडी है, बस 3 आईडी है ये मेरी लाइफ में। 3 ही आईडी ज्वाइन करना, बाकी तो सब सपोर्ट आईडी है। थैंक यू थैंक यू। उषा दीदी राधे राधे, स्वागत है आपका मेरी लाइव में। और बताओ क्या हाल चाल है? आकाश भैया उषा दीदी आपको ज्वाइन की हैं दीदी, आपके लाइव में जो आए हैं उनसे लाइव और सब्सक्राइब करो। ठीक है ठीक है,
कुसुम दीदी ये कुसुम वाली आईडी को भी ज्वाइन कर लेना। उषा दीदी आप भी ज्वाइन कर लो। और मैं ब्लू दे रही हूँ उषा दीदी, ये पिन आईडी को सब लोग ज्वाइन कर लो। रिटर्न दे देंगी है मेरी लाइव में। उषा दीदी आप भी ज्वाइन कर लो। कुसुम दीदी मैंने आपको ब्लू दे दिया है, आप भी ज्वाइन हो जाओ। आकाश भैया तो ज्वाइन कर रहे हैं सबको, राधे राधे। पंकज भैया को ज्वाइन कर लो जो ज्वाइन नहीं किए हैं। अर्चना को ज्वाइन किया नहीं भैया, अर्चना को ज्वाइन नहीं करना था, मैं पहले ही बता रही थी ना। देखो पंकज ब्लाइंड, पंकज विश्वकर्मा और कुसुम वाली आईडी उषा ने आपको ज्वाइन किया है, इनको रिटर्न कर दो। उषा डायरी और ये जो लिखा है और ये जो पिन आईडी है इसको ज्वाइन कर लो ना दीदी, रिटर्न कर देना। मैं भी रिटर्न कर देती हूँ, भले ही चैनल नहीं है पर मैं रिटर्न कर देती हूँ। पिन आईडी को ज्वाइन किया, अच्छा पिन आईडी ज्वाइन किया है। संजू दीदी रिटर्न कर दो, पिन आईडी को ज्वाइन किए हैं आकाश भैया, रिटर्न कर दो। बाय बाय खुशबू, बाय बाय। और आकाश भैया आपको उषा दीदी ज्वाइन किए हैं, रिटर्न कर दो। ठीक है ठीक है खुशबू, जाओ बाय बाय। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ वीडियो पर कमेंट छोड़ दे, मैं देख रही हूँ। हाँ ठीक है, नींद आ रही दीदी, ठीक है जाओ। कमेंट छोड़ देना, जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो देख रही हैं दीदी, सबको रिटर्न देती जाएंगी। सबका कमेंट देख रहे हैं, सब लोग कमेंट छोड़ते जाओ, ज्वाइन करते जाओ, रिटर्न दे देंगे। अर्चना को ज्वाइन किया है, ठीक है भैया। अर्चना का क्लिकर चल रहा है, मैं बोल दूँगी जब क्लिकर निकालेंगी तो। और उषा जी को आप रिटर्न कर दो। मोहिनी जूली से रिटर्न मिल जाएगा आपको, देख रही हैं वो दीदी। भक्ति भजन रीति से आप ज्वाइन हो जाओ। भक्ति भजन रीति ऋतु दीदी आप इनको आकाश भैया को रिटर्न कर देना, ये आपको ज्वाइन करने जा रहे हैं। पंकज भैया भी हैं, आप उनसे भी जुड़ जाओ। उषा दीदी अपनी आईडी को ज्वाइन कर लेना, ये संजू दीदी की आईडी है। उषा जी को ज्वाइन कर ली, अच्छा उषा जी आपको पहले ज्वाइन। रीति दीदी, रीति दीदी रिटर्न कर देना, आकाश भैया ज्वाइन कर रहे हैं आपको। ऑन रखो, मेरी बातें सुनते रहना बस आप। जब कोई ज्वाइन कर रहा है तो हम बता देंगे, आप रिटर्न कर देना, मत परेशान होइए। हाथ से कर रहे हो, क्लिकर नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं। बहन हम रिटर्न कर दी हैं आकाश भैया, चेक कर लो आप। मोहिनी जूली लोकगीत
से आपको रिटर्न मिल गया है आकाश भैया, आप चेक कर लो। आकाश भैया रिटर्न कर दिए। आकाश भैया उषा दीदी भी रिटर्न कर दी हैं आपको। राधे राधे पंकज भैया। अभी सिर्फ अर्चना से नहीं मिला है, आपको दोनों आईडी से रिटर्न मिल गया है। ठीक है, जाओ रीति दीदी, बाय बाय। ठीक है दीदी, जाओ, थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू आकाश, आशीष, थैंक यू उषा दीदी, थैंक यू अर्चना दीदी, थैंक यू पंकज भैया, थैंक यू संजू दीदी। और बताओ उषा दीदी, घर का क्या समाचार है? आप तो घर पहुंच गई हो ना। संजू दीदी, उषा दीदी आपको ज्वाइन की हैं। मोहिनी वही हैं उषा दीदी जिनकी लाइव में आप जाती थी ना, संजू निषाद ऑफिशियल, वही दीदी की आईडी है। वो बंद हो गया, अब इस पे लाइव चलाएंगे। सब ठीक है दीदी, चलो अच्छा है, ठीक रहना चाहिए। हाँ, मेरा खाना पीना हो गया है, आपका हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बहन, वीडियो पर अभी कमेंट नहीं आया है, मैं देख रही हूँ, कमेंट पहुँचेगा इस समय मैं रिटर्न कर देंगे दीदी। क्या भाभी जी, क्या हुआ? धन्यवाद, क्यों कर रही हो हमारा? मैंने तो नहीं बोला शायद कि पंकज भैया। कौन किया? कौन किया भैया? मैं तो शायद कि नहीं बोली।
राधे राधे पंकज भैया। हाँ दीदी अभी खाना खाई। अच्छा खाना हो गया। बच्चे लोग सब ठीक हैं? वाह। मैं भी 10:30 बजे बंद कर दूँगी। तब तक अर्चना दीदी का भी हो जाएगा। कुसुम दीदी थैंक यू। कुसुम दीदी आज आपने किसी को नहीं ज्वाइन किया ना? दीदी नींद आ रही है क्या? नहीं नींद नहीं आ रही है, पर मैं सो जाती हूँ ना। कल भी ऐसे चालू की थी, मैं सोच रही थी 11 बजे बंद करूँगी, उसके बाद मैं सो गई तो उठी तो मेरी मोबाइल स्विच ऑफ हो चुकी थी। सब पूरी लाइफ बेकार हो जाती है, जो मिला रहता है वो भी। ये इमोजी मत भेजो कुसुम दीदी, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। ये लाल वाली मत भेजो मेरी दीदी, इससे को आज टाइम पूरा कट जाएगा मेरा। स्वागत है सीमा दीदी आपका मेरी लाइव में। और बताओ क्या हाल चाल है आपका? राधे कृष्ण राधे कृष्ण। इसीलिए तो आज मैं बैठी हूँ अभी तक कि मैं जागती रहूँगी। और बस कल ऐसे आलस आया, मैं सो गई थी। मिला था कल भी, मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था, सब लोग जुड़े थे मेरे लाइव में, लेकिन मेरा पूरा लाइव बर्बाद चला गया। तो इसीलिए बंद करूँगी, फिर उसके बाद वापस से चालू करके छोड़ दूँगी। आती हैं मेरी बहन बहन रात में, तो फिर वो लोग अपना ज्वाइन करके रख देंगी लाइव। हाल चाल बता दो सीमा दीदी। चालू करके रख दो, मैं भी अपना 3 अकाउंट ज्वाइन करके रख दूँ। चालू करूँगी दीदी, जब जागती रहूँगी तो चालू करूँगी, सो जाऊँगी तो कोई बात नहीं है, कल के जैसे। और इसीलिए अभी मैं बैठी हूँ, बैठी रहूँगी जब तक लाइव चलाऊँगी, उसके बाद जब लेटूँगी तो मैं तुरंत बंद कर दूँगी। आज नहीं छोड़ूँगी। वैसे उषा बहन को मैंने रिटर्न कर दिया है, लेकिन उनके चैनल पर तो लॉन्ग एक ही वीडियो है, वही वीडियो पर वॉच करके। हाँ उषा दीदी का लॉन्ग वीडियो नहीं है ना, उनका सब शॉर्ट वीडियो है। थैंक यू पंकज भैया। राधे राधे। सीमा दीदी बात नहीं कर रही है। राधे राधे पंकज भैया। राधे राधे। तनु राधे राधे तनु। और बताओ क्या हाल चाल है? खाना वाना खा ली हो कि नहीं अभी? थैंक यू। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हाँ मौसी खाना खा लिया। अच्छा अब सोने जा रही हो? थैंक यू थैंक यू सभी को थैंक यू। सीमा दीदी क्या हुआ, नाराज़ हो क्या? आप हाल चाल भी नहीं बताए।
तुरंत आपका ऑटो लग गया है। एक आईडी से तो ऑटो लगा, एक आईडी से नहीं लगा, बात तो उससे कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। बाय 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 आशीष, बाय 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 बाय। राधे राधे पंकज जी, राधे राधे। थैंक यू अर्चना दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू उषा दीदी, राधे 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 अर्चना दीदी, राधे 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 पंकज दीदी, राधे राधे, थैंक यू।
पूनम बहन सो गई क्या? नहीं दीदी, अभी सोई नहीं हूँ, अभी जग रही हूँ। हाँ सीमा दीदी कुछ जवाब भी तो नहीं दे रही, मैं भी तो हाल चाल पूछी, वो भी नहीं मिल पाया। हमारे यहाँ पर 3 ऑर्डर निकाल लिए। मैंने देखा दीदी, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, थोड़ी देर मनोरंजन भी कर लें। कुछ देर तक देखेंगे फिर बच्चे लोग भी सो जाएंगे ना, और वैसे भी 10:15 बज गए हैं, बहुत चलाएंगे, 10:30-11 बजे तक, फिर सो जाएंगे वो लोग भी। आज मैं नहीं गई थी सीमा दीदी के लाइव में, इसीलिए नाराज़ हूँ, क्या करूँ, आज हम किसी के लाइव में नहीं गए थे। खुशबू बहन चली गई क्या? हाँ, खुशबू बहन कब के चली गई भैया, वो बोल रही थी मुझे नींद आ रहा था। आज सीमा दीदी पता नहीं मेरी लाइव सुबह आई थी तो जल्दी चले गए थे। सीमा दीदी 1 घंटा करके चली गई थी ताकि कल मैं सीमा दीदी के 7 से 8 तक 2 ऑर्डर से सपोर्ट करूँगी। अच्छा, क्या कमेंट क्या हुआ, नाराज़ क्या हो? अब जवाब ही नहीं दिए हैं तो क्या जाने कौन कर हुआ। आई थी तभी मैंने स्वागत किया, हाल चाल पूछी, आज हाल चाल भी नहीं मिला है। पंकज भैया और हाल चाल बताओ, कैसे हैं आप? आजकल तो आप सपना ही नहीं आते। हाँ, ईद के चांद हो गए हैं पंकज भैया। दो घंटा मैं सपोर्ट कल करी थी सीमा दीदी का, आज जाकर सीमा के लाइव में 1 घंटा करके चली गई, कुछ जवाब ही नहीं दिया। और अभी भी तो सीमा दीदी नहीं बोल रही हैं, पता नहीं वो नहीं है क्या, चूँकि वो नहीं रहती हैं तो भी कोई जवाब नहीं मिलता है, कोई दूसरा कमेंट करता है तो भी जवाब नहीं मिलता, पता नहीं कौन कमेंट कर रहा है। जवाब मिलेगा, ऐसे नहीं, कुछ बुराई कर दो फिर उसके बाद जवाब तुरंत मिल जाएगा। जिसके बोलने का नहीं मन रहेगा वो भी बोल देगा। थैंक यू तनु, थैंक यू। पंकज भैया बात तो कर लो, दीदी संजू दीदी बोल रही हैं। थैंक यू।
गोल गोल हाथवा के रंग रंग कटिया अभी बीत चढ़वा लगाई मैंने रचिया। क्यों भाभी जी क्या हुआ, कहाँ हम चाँद हो गए हैं? और क्या भैया, चाँद हो ही गए हो। नहीं पूनम, नाराज़ नहीं हूँ, क्यों नाराज़ होगी? कुछ जवाब नहीं मिल रहा था दीदी, इसीलिए मैं बोल रही थी। तो लगता है आप नाराज़ हो, कुछ जवाब नहीं मिल रहा था। सीमा दीदी भी आपसे कमेंट की थी, ओ सॉरी संजू दीदी, मैं भी पूछ रही थी, जवाब नहीं मिला। संजू दीदी का ये मंजू मोहिनी, ओ मोहिनी जूली वाली आईडी से संजू दीदी है ना? थैंक यू थैंक यू। सॉरी भाभी जी, यहाँ पर हम बात नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हम दिल से क्षमा चाहते हैं। अच्छा, वो क्लिकर चल रहा है ना, इसलिए पंकज भैया बात नहीं कर पाएंगे। सीमा दीदी का क्लिकर चल रहा है ना, वो तेज चलता है, इसीलिए पंकज भैया नहीं बात कर पाएंगे। सॉरी बोल रहे हैं संजू दीदी। संजू दीदी पढ़ लो कमेंट सीमा दीदी का। सीमा दीदी बोल रही हैं आज संजू नहीं आई थी हमारे लाइव में। मैं भी नहीं गई थी सीमा दीदी, आज मैं किसी के लाइव में नहीं गई थी, न ड्यूटी दीदी के लाइव में, न आपके लाइव में, न रूबी दीदी के लाइव में, किसी के लाइव में नहीं गई थी मैं। संजू दीदी सीमा दीदी का कमेंट पढ़ लो आप। वो बोल रही थी आज संजू मेरे लाइव में नहीं गई थी। राधे राधे उषा दीदी, राधे राधे अर्चना दीदी, थैंक यू। हमको तो कमेंट कैसे, हमारा तो कमेंट कैसे जाए, किसी में हमारा नेट भी ख़त्म हो जा रहा था रोज़। आज फिर 2 GB शाम को भरी तब आई हूँ, नहीं तो आज भी नहीं आ पाती इसके लाइव में। अच्छा, नेट ख़त्म हो जा रहा था तो 2 GB रिचार्ज कराई हैं आप? अभी तक तो आपका चल रहा था ना सीमा दीदी। अभी तक कैसे चलाती थी आप? तो काफ़ी लोगों का सपोर्ट भी करती थी। मेरा भी ख़त्म हो जाता है कभी कभी आर्या का सपोर्ट करने में, मैं अपना खुद का नहीं कर पाती हूँ। नेट ख़त्म हो जाता है तो मुझे भी दिक्कत हो जाती है। आज मैं नहीं गई थी लाइव में क्योंकि हमारे यहाँ लाइट की दिक्कत थी। अब कल मैं 2 घंटा रात को करके आई थी, तो सीमा दीदी आज सुबह 1 घंटा करके चले गए थे। तो मैंने कहा पता नहीं सीमा दीदी क्यों चली गई, कुछ बताए भी नहीं। सीमा दीदी पढ़ लो संजू दीदी क्या लिखी हैं। हम कई बार बोल भी रहे थे कि आज पूनम नहीं आई है और संजू 2 लोग हमारे लाइव में नहीं है। हाँ बोल रही होगी दीदी, क्योंकि जब मैं लाइव में थी ही नहीं तो मैं सुनूँ कहाँ से। और आज तो मैं रेवती दीदी के भी लाइव में नहीं गई थी, आप गई होगी तो देखी होगी, मेरा कमेंट नहीं मिला होगा आपको, एक भी आईडी मेरी नहीं चलती मिली होगी आपको।
पढ़ लो। सीमा दीदी, संजू दीदी लिखी हैं। वो कह रही हैं कल शाम को 2 घंटा आपको दी थी और सीमा की लाइव में आपने 1 घंटा करके आई हैं उनका। तो वो पूछ रही थी, आप कुछ बताए भी नहीं, वो बोल रही हैं। इसलिए मैं आज नहीं गई थी सीमा दीदी के लाइव में। मैंने कहा कि पता नहीं सपोर्ट करने का टाइम है कि हो ना हो, क्योंकि एक दिन कह रही थी ना कि मेरे में नेट रहेगा तो मैं किसी के लाइव में नहीं जाऊँगी। अच्छा, वाईफाई से चला रहे थे नेट, वाईफाई बंद हो गया। अच्छा, अभी तक वाईफाई से चला रही थी, अब वाईफाई बंद हो गया। हाँ, तो नेट की तो दिक्कत होती ही है, क्योंकि हम लोगों का भी, मेरा भी ख़त्म हो जाता है ना। तो मैं अपना ही कम करती हूँ, क्या करूँ। अब 2 GB नेटवर्क है, 12 बजे के पहले ही ख़त्म हो जाता है स्कूल। तो वो तो ख़त्म हो ही जाएगा ना। 2 GB नेट बिल्कुल भी नहीं चलता है सीमा दीदी। अगर अभी 2 लॉन्ग वीडियो आप चला दो तो लाइव नहीं चला सकती हो ना, तो किसी का सपोर्ट करने के लिए बचेगा। 1 लॉन्ग वीडियो अपलोड कर दो और थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दो, उसी में ख़त्म हो जाता है। 2 GB में कितना ज़्यादा मिलता है। और उस तरह मोबाइल चलाओ तो चलता है, पर अपलोड करो या कि लाइव चलाओ, लाइव में जाओ तो नहीं चलता है। नेट नहीं था, इसलिए आज सबका सुबह में 1-1 घंटे का मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं आपके लाइव में इस टाइम नहीं आई। मैं ज़रूर आती हूँ। अच्छा, आज हम भी नहीं गए थे रीति के लाइव में, बस सुबह वाले में गई थी। अच्छा, 1 ही घंटा। हाँ, मैं भी नहीं गई थी और रीति दीदी अभी आई थी। अब सुबह में देखेंगे, इनकी मोबाइल रहेगी, सुबह में कर दूँगी सपोर्ट। 1 घंटा के लिए इनकी लगा दूँगी, फिर अपनी लगा दूँगी, हो जाएगा उनका। क्योंकि वो दोपहर में भी मेरा सपोर्ट किए, अभी भी करके गई हैं। हाँ, तो कल सुबह मैं उनका 2 घंटा की थी ना, तब हमें शाम को 2 घंटा रिटर्न मिला था। अच्छा, आज सुबह का 1 घंटा मेरा बाकी है संजू के ऊपर। अच्छा, संजू दीदी तो कह रही हैं मेरा बाकी है। संजू दीदी पढ़ लो, सीमा दीदी बोल रही हैं अभी उनका 1 घंटा बाकी है आपके ऊपर। जिसको ज़्यादा सपोर्ट होता है, अगर नहीं याद रहता है तो लिख लिया करो। राम राम भैया, और बताओ क्या हाल चाल है अनिल भैया। स्वागत है आपका भी मेरे लाइफ में। और तबीयत कैसी है रेखा की, बताओ, आराम हुआ उनको कि नहीं आराम हुआ। हाँ, सीमा दीदी कल आपके लाइव में आऊँगी मैं, संजू निषाद ऑफिशियल वाली आईडी से, तो ब्लू हटा लेना, क्योंकि उस चैनल से मैं सभी का ब्लू वापस करना चाहती हूँ, कोई गलती ना करते हैं। अच्छा, सही बात है, जब वो चैनल नहीं चलेगा तो ब्लू रख के कोई मतलब नहीं है। बताओ भाभी जी, क्या हुआ था जो आप आज किसी के लाइव में नहीं। कुछ नहीं हुआ था भैया, मेरे पास मोबाइल नहीं थी। आप मुझे उसका भरोसा नहीं है, चैनल उसके हाथ में हो जाएगा तो ब्लू रहेगा, पता नहीं क्या करे क्या ना करे, इसलिए मैं सबका ब्लू हटाना चाहती हूँ। बिल्कुल सही बात है दीदी, सही बात है, सबका ब्लू हटाना चाहती हैं आप, एकदम राइट बोल रही हैं और सही बात है।
आपके बनाए तो जल्दी इसलिए होता है। अरे तो कैसे संजू का बाकी है हमारे ऊपर। कल सुबह मैं उनका 2 घंटा सपोर्ट करके आई थी तो शाम को हमें 2 घंटा रिटर्न करके गई थी संजू। आज सुबह मैं 1 घंटा की हूँ वो बाकी। अच्छा देख लो तो संजू दीदी हैं, पढ़ लो अपना संजू दीदी। सो जाओ पूनम भाभी, आपको नींद आ रही है तो। नहीं बैठी हूँ भैया, इसके लिए नहीं आ रही है, और लेटती हूँ तो तुरंत नींद आ जाती है। अभी मैं बैठी हूँ। अभी मेरी दूसरी वाली आईडी चल रही है आर्या की लाइव में ना, उसको बंद कर दूँगी, नहीं तो वो भी सो जाती हूँ तो जिसके लाइव में लगा रहता है वो लगा ही पड़ा रहता है। उठने के बाद मालूम है क्या होता है, चार्जिंग में अगर लगा के सोती हूँ तो अगले दिन वाला भी मेरा नेट साफ़ हो जाता है, और अगर चार्जिंग में नहीं रहती है तब तो सब हम लोग की स्विच ऑफ हो जाता है, अच्छा रहता है। और चार्जिंग में लगी रहती है तो चार्ज होता रहता है, और जब तक जिसकी लाइट चलती रहती है तब तक वो चलता रहता है। सुबह उठने पर यही मिलता है कि उसमें का भी डाटा ख़त्म हो गया जो अगले दिन मिलने वाला है, क्योंकि 12 बजे के बाद दूसरा मिल जाता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। इसके लिए पहले बंद करूँगी उसको तब चलाऊँगी, नहीं तो कल भी नहीं मिल पाएगा। और आपसे हमें पूछ रहे थे क्या हुआ जो आप आज किसी के लाइव में नहीं। बता तो रही हूँ पंकज भैया, मोबाइल नहीं थी मेरे पास मोबाइल नहीं थी आज। हाँ कोई बात नहीं दीदी, मैंने कहा कि जानकारी हो जाएगी तो मैं ज़रूर आऊँगी सपोर्ट करने के लिए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत है और आपको भी ज़रूरत है, लेकिन तो इसलिए मैं आज नहीं आई। मैंने कहा बात नहीं हुई। अच्छा मोबाइल नहीं थी इसीलिए मैं सो रही थी पंकज भैया, और घर में अकेली थी, बच्चे भी नहीं थे तो मन नहीं लग रहा था। अरे दीदी किस तरह जोड़ती हैं, परसों मैंने दोनों टाइम किया था तो आप आई नहीं, फिर सुबह नहीं, सीमा दीदी का ध्यान नहीं। परसों मैं दोनों टाइम की थी उनकी लाइव में, और सीमा मिलकर दोपहर में भी, शाम को में। अच्छा हाँ सीमा दीदी की कमेंट तो चल रहा था, पढ़ लो सीमा दीदी पढ़ लो कमेंट। 3 बजे वाली में भी मैं परसों गई थी 2 घंटा का, शाम वाले में भी, लेकिन कोई बात नहीं है, हमें भी इतना ज़रूरी भी नहीं है कि मैं कर दूँगी। अच्छा 2 दिन से मैं दोपहर वाली लाइव नहीं चालू कर रही हूँ, ये सब लोग को पता है। हाँ कल और आज तो नहीं चली थी, परसों आपकी चली थी, कल नहीं चली थी, आज नहीं चली थी। संजू दीदी परसों कह रही हैं भाभी जी आपके पास कमेंट बहुत लेट पहुंच रहा। अच्छा बहुत लेट पहुंच रहा है भैया, तो कैसे करें जल्दी आ जाए। संजू बहन मैं दिल्ली आके डेली आपके लाइव में आती हूँ, और 2 दिन से मैं दोपहर वाली लाइव नहीं चला रही हूँ, बस एक ही टाइम आ रही हूँ लाइव। अब मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, बोलता हूँ जिसका जितना सपोर्ट रहता है मैं रिटर्न करती हूँ। कोई बात नहीं दीदी, मैं तो ऐसे भी कर दूँगी, पर लाइव में आओ चाहे 10 मिनट के लिए, अभी इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं तो आई रहूँगी, कर दूँगी, इसका टेंशन मत लो। राधे राधे दीदी, परसों का
तो परसों का 1 घंटा सुबह में देखिए, अभी 1 घंटा शाम को रिटर्न की थी संजू। मैं तो इतना याद ही नहीं कर पाती हूँ दीदी। पूनम बहन, मेरा फ़ोन आ रहा है, मैसेज करूँगा कॉल पर बात कर। ठीक है दीदी, बात कर लो आप। हम तो इतना याद ही नहीं कर पाते हैं। बस अभी कल किए हैं तो आज तक याद रहेगा, परसों का मैं याद नहीं रखती हूँ ना, तो मैं जोड़ती हूँ उसको। नहीं पूनम, जो टाइम से टाइम रहते हैं उनका हम ध्यान करते हैं, सबका ध्यान नहीं करते। हाँ वो तो सही है, उनका तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। जो ज़्यादा तकरार करता है बस मैं उन्हीं का ज़्यादा गौर करती हूँ, बाकी सबका नहीं करती। कुछ लोग हैं 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं देना चाहते हैं, और उनके लाइफ में 1 मिनट कम हो जाए तो बहुत छनछनाते हैं, तकरारी होते हैं। तो उनका तो मैं बहुत वो कितना किए रहते हैं, या तो लिखती तो नहीं हूँ जल्दी से, मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों को गुस्सा आता है जो मिनट मिनट के लिए अगर बहस करे तो मुझे गुस्सा आता है। मैं दीदी सबको 2 घंटा मैं डेली सबको 2 घंटा सपोर्ट करती हूँ सुबह में, लेकिन मैं आज 2 दिन से परेशान होने के लिए आज से 1 घंटा कर रही हूँ। अच्छा, 1 घंटा कर रही हूँ। अभी कल का रूबी का 1 घंटा करके गई है, उनका सपोर्ट नहीं कर पाई, अब उनका कल करूँगी। अभी तो वो कल हो सकता है नहीं चलाएंगे, वो ट्रेन पर है ना, घर जा रहे हैं। उनकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। राधे राधे पंकज भैया, ऐसे ही संतोषी की थी ना, 10 मिनट के लिए झंझट की थी, मैं छोड़ दी लाइव। हाँ आप नहीं दिखती हो ना, आप उनकी लाइव में अब नहीं दिखती हो, वो भी नहीं दिखती हैं। और जिस दिन हो रहा था बात उस दिन तो मैं थी ना, मैं भी तो लाइव में थी जब बहस हो रही थी। तो आर्या दीदी, मेरा 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया। आर्या दीदी, मेरा 1.5 घंटा हो गया, अपना चल। ऐसे ही अच्छा देखो, तभी मैं चेक करें क्योंकि लाइव नहीं चल रही। अच्छा, किसकी? रूबी की लाइव नहीं चल रही थी। रूबी की मम्मी बहुत तेज़ बीमार हैं, अभी इस समय वो ट्रेन पे होंगी, कल पहुंच जाएंगी, तो पता नहीं चलाएं या ना चलाएं। मैंने तो उनका बराबर कर दिया, हम किसी का हिसाब नहीं रखते हैं। टाइम टू टाइम वालों का तो मेरे पास किसी का है ही नहीं। मेरा सबके पास है पर मैं किसी का नहीं रखती हूँ। मैं जितने लोगों की लाइव छोड़ी हूँ सबका मेरे पास आधा घंटा 1 घंटा, आधा घंटा 1 घंटा मेरा ही बाकी है, और दूसरे का मेरे पास नहीं। क्योंकि दूसरे का मेरे पास रहता है तो मैं अपनी लाइव भले ही ना चालू करूँ और सबका सपोर्ट करके तो आती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता अगर कोई बोलता है तो। इसलिए मैं किसी का बकाया नहीं करती हूँ, अपना नुकसान कर देती हूँ पर बकाया नहीं करती। चाबी कहाँ है? थैंक यू दीदी, आ रहे 1 मिनट में कमेंट कर दीजिए।
थैंक यू दीदी, थैंक यू। उषा दीदी थैंक यू। उषा दीदी खाना पीना खाई कि नहीं खाई? आप अभी लाइव में ही जुड़ी हैं, खा लो दीदी। बस 2 दिन से आपका सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए आज आपका ही सपोर्ट करूँगी। अच्छा, कोई बात नहीं है दीदी। संजू दीदी भी मेरी तीनों टाइम तीनों आईडी से सपोर्ट करती हैं, लेकिन मैं इनके बराबर नहीं कर पाऊँगी, क्या करें। हमारा इनसे कोई टाइम टू टाइम नहीं, जैसे आपका नहीं मेरे से कोई टाइम नहीं, वैसे इनका भी नहीं है। खाना पीना हो गया दीदी? अच्छा, वो ना मेरा टाइम देख के करते हैं, ना मैं उनका करती हूँ, क्योंकि मैं उनका कर भी नहीं पाऊँगी। उनके पास 3 आईडी है और वो तीनों आईडी लगा देती हैं, सुबह में भी, शाम को भी, दोपहर में भी। तो उस हिसाब से तो इनका मान लीजिए अभी 3 घंटा हो गया, सुबह 3 घंटा हो गया, दोपहर को हो गया, तो हम कहाँ इतना दे पाएंगे इनको। ये बताओ भाभी जी, किसकी मम्मी की तबीयत खराब? रूबी की मम्मी की तबीयत खराब है भैया। कल वो शाम को खूब अपनी लाइव में रो रही थी ना, तो वही मैंने पूछा, बात कर रही थी, आवाज़ म्यूट कर दे रही थी बार बार, तो हमने पूछा उनसे, तो खूब रो रही थी, बोल रही थी मेरी मम्मी बहुत बीमार है, ना तो बोल रही है ना तो कुछ नहीं, एडमिट है। तो मैंने वही बोला, आप घर इस समय तो आपको घर जाना चाहिए था। तो बोली हाँ आज मैं जाऊंगी, तो आज वो निकल गई हैं। दीदी मेरा खाना हो गया? अच्छा अच्छा दीदी, हो गया आपका खाना? हाँ, तो खाली है तो करना चाहिए सपोर्ट, से दूसरा कोई खाली हो जाएगा तो उनका भी सपोर्ट कर देगा। हाँ वो तो सही बात है, लेकिन हर किसी की ऐसी सोच नहीं होती है ना दीदी, सब नहीं करते ना ऐसा। अब अगर ये लाइव भी चलाएंगे तभी तो हम इनका नहीं कर सकते हैं ना। और जब चल भी रही थी तब भी मैं नहीं कर पाती थी। सुबह में तो मेरी 2 आईडी लग जाती थी, पर शाम को एक ही मैं लगा पाती थी, एक आप में लगती थी, एक संजू दीदी की। तो इनके बराबर मैं कभी नहीं कर पाती हूँ इनका सपोर्ट। शुरू से आज तक मैं इनका कभी, जितना ये मेरा की है, मैं इतना इनका नहीं कर पाई हूँ। नहीं, हम तो ये सोचते हैं कि अगर खाली टाइम रहे तो जितना बंद पड़ा रहे उतना एक दूसरे का। हाँ वो तो सही है। और अगर मेरे में नेट रहता है, मोबाइल खाली रहती है, कोई काम नहीं रहता, तो मैं भी लगा देती हूँ किसी न किसी के लाइव में जिसकी चालू रहती है। सोचती हूँ बच्चे देखेंगे तो कार्टून देखेंगे, उससे क्या मिलेगा, और इससे है तो किसी का सपोर्ट ही मिल जाएगा। तो मैं भी लगा देती हूँ और बोल भी देती हूँ कि अगर आपके पास टाइम हो तो मुझे देना, नहीं तो मत देना, मैं लगा दी हूँ वैसे। क्या बताऊँ भाभी जी, हमारे तो इस समय लाइव में किसी से बात ही नहीं हो पाती। हाँ पंकज भैया, लेकिन क्या किया जाए, अभी किसका बाकी है आपका? अभी मेरा 500 है दीदी। आवाज़ 60 पर आई थी ना, 2 GB हमारे में तो जितना बचा है, हम सोच रहे हैं कि 12 बजे तक सब आदमी। वही मैं भी होता है मेरे भी में, जैसे बचा रहता है लास्ट में, तो मैं अपने ही आईडी में लगा देती हूँ, मेरी आईडी में लग गई है। अब 12 बजे तक मतलब ये चलता रहेगा, और 12 बजे के बाद फिर दूसरा नेट ख़त्म होने लगता है ना, तो 12 बजे बंद करना पड़ता है। तो अगर 12 बजे नहीं बंद कर पाए तो फिर वो भी नेट खिंच जाएगा। चलो, तो 500 तो बहुत जल्द हो जाएगा, 1 महीने लगेगा। हाँ 1 महीने लगेगा, हो जाएगा, 1 महीने लगेगा। अभी मई चल रही है, जुलाई में होगा, जुलाई जून लगेगा, इसके बाद हो जाएगा मेरा। इसीलिए तो इस समय वीडियो भी ज़्यादा नहीं बना के डाल रही हूँ, दूसरे तीसरे वीडियो डाल देती हूँ। सपोर्ट में ज़्यादा लगी हूँ कि समय से पहले अगर हो जाता है तो और अच्छा है।
तो इसलिए तो सोच रही थी ना कि 12 बजे तक नेट वैसे भी ख़त्म हो जाएगा तो सपोर्ट में। हाँ, 12 बजे तक वो तो किसी काम का नहीं रहता। और वही तो मेरा भी है, मैं भी लगा दी हूँ अपनी आईडी। अब कल तो मेरा चल रहा था, जब ये जागे तो मुझे बोले कि मोबाइल चालू है, लाइव बंद नहीं किए, पर मैं नींद में थी, नहीं जान पाई। ये भी नहीं बंद किए, आवाज़ अकेले साइलेंट करके रख दिए। इनको बंद कर देना था मेरी लाइव, पर बंद नहीं किए, वैसे ही छोड़ दिए। तो सुबह उठी तो मेरी मोबाइल ही स्विच ऑफ हो गई थी। लेकिन आज चार्ज में लगा के सोऊंगी, ऐसे नहीं रखूंगी। कल तो ऐसे रख दी थी, आज चार्जिंग में लगा के सोऊंगी। अर्चना दीदी थैंक यू। कितना उतार रही हो? 1.5 घंटा हो गया। नहीं, 1 घंटा 40 मिनट तो हो गया अर्चना दीदी आपका। हो गया बराबर अर्चना दीदी। 1 घंटा 40 मिनट था मेरा आपके पास। 1 घंटा 40 मिनट मेरी लाइव चलते हो गई। निकाल लो अब अपनी आईडी। किसी और का सपोर्ट करना है तो लगा दो उसमें। काश के ऑटो क्लिकर करना होता तो आज हम सबसे अच्छी तरह से बात कर पाते। अच्छा, ऑटो क्लिकर होता तब बात कर पाते होंगे। अच्छा, ऑटो क्लिक करना होता था। फिर भी आप बातें तो कर रहे हो। जहाँ जवाब देना है वहाँ दे रहे हैं, बहुत है इतना। और आज ने आप मुझे बहुत टाइम दे दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बस मुझे भी थोड़ा टेंशन है, रीना दीदी से नहीं बात हो पा रही है, क्या करें हम। वो सोचती होंगी कि पूनम अपने चक्कर में नहीं आ रही हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं परेशान हूँ उनके लिए। डेली उनके लाइव में जाते हूँ, लाइव नहीं चलती है, चल रही प्यारी। अभी शाम वाली चल रही, लेकिन क्या करें। ब्लू हटा दी है सगुन, वो हमेशा हटाती रहती है। दिव्यांश वाली आईडी से कल मैं शाम को जुड़ी थी, हमने सोचा लगा दें, थोड़ा हो जाए सपोर्ट। नहीं दिन में चल पा रही है उनकी तो, और ब्लू ही हटा देते हैं, तभी क्या करेंगे। कमेंट भी करके रखे हूँ सगुन ब्लू दे देना, फिर भी मिलता ही नहीं है। लेकिन ब्लू से ऐसा कोई मतलब नहीं है। मैं सोचती हूँ भैया, जब सबको दे ही दिया रहा, लगभग मैं सभी का ब्लू से ही चलता है, किसी का ऐसा नहीं बगैर ब्लू का हो। तो अब क्यों ब्लू देने में क्यों डर है? दे दो, चैनल मोनो हो जाएगा, चाहे जैसे चलाना। जब दे ही रहे हो तो दे दो, चाहे 1 को दो चाहे 4 को दो, ब्लू तो दे रही हो ना। पर नहीं मिल रहा है, क्या करें। ऐसी बात नहीं है भाभी जी, आप उनके लिए परेशान हो, वो तो आपके लिए परेशान हैं। ऐसी बात नहीं है भाभी जी, आप उनके लिए परेशान हैं, वो तो आपके लिए परेशान हैं, क्योंकि उनका इंटरनेट नहीं चलता है, इसलिए लाइव में जो नहीं पाते हैं किसी से। पता नहीं क्या हो गया, वो कभी आते हैं मेरी लाइव में तो बता रही थी। और सीमा दीदी के लाइव में तो आज गई थी, वो सीमा संजू ब्लॉग वाले में। इतना कैसे नेट भागता है, 2-4 दिन तो मेरा भी गड़बड़ चलता है, पर उनका लगभग ऐसे 10 दिन से हो रहा है। बिल्कुल से क्या हो गया उनके, पता नहीं। नेटवर्क आईसी तो नहीं उनकी ख़त्म हो चुकी है,
इसको दिखा दें एक बार। कल या परसों मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी उनकी, तो फिर मैं उनके चैनल पर गई और फिर मैं उनका गीत भी सुन रही थी। सगुन गा रही थी और दीदी दोनों मिल के गा रही थी, तो मैं तो फिर उनका गीत सुनी थी। हमें लगता है आज अर्चना दीदी भी आईडी लगा के सो गई है, क्योंकि उनके आईडी। बाय बाय उषा दीदी, बाय बाय। मैंने बोला फिर भी आईडी नहीं थी, हमें लगता है सो ही गई हैं, नहीं तो अब तक आईडी इनकी निकल जाती। राधे राधे दीदी, राधे राधे। मैं तो सोची आप सो ही गई हो, आईडी नहीं निकाल रही हैं। राधे राधे पंकज भैया, राधे राधे। 11 बजने वाले हैं ना, 5 मिनट बाकी हैं बस। थैंक यू, राधे राधे, राधे राधे पंकज भैया, थैंक यू। ठीक है पंकज भैया, 11 बज गए हैं, अब आप भी जाओ खाना पीना खा लो, बाय बाय कर दो। मैं सोच रही हूँ ये वाली बंद कर दूँ, नहीं तो कल के जैसे मेरी बंद ना हो जाए, क्योंकि मोबाइल थोड़ा थोड़ा गर्म हो रही है।
दीदी अब 11:30 बज गए हैं। कल भैया चले गए, मैं जान भी नहीं पाई। थोड़ी देर के लिए मेरी आंखें बंद हो गई थी। ठीक है दीदी, अब मैं सोने जा रही हूँ। जब आपकी इच्छा होगी तो आप चले जाना।